अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। जो थोड़ा बहुत इंट्रो हमने जो है वो प्रीवियस लेक्चर में लिया था, आज हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे पास जो मसल्स होते हैं स्केलेटल मसल्स, उनको हम मसल मास या मसल फाइबर्स कहते हैं एंड दे आर मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल मसल सेल्स और मायोसाइट्स। इन्हीं मसल सेल्स को जो है वो हम मसल फाइबर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग होते हैं, सिलेंडर इन शेप होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। जो मसल मास होता है डेट इज सेपरेटेड बाय नेबरिंग टिश्यूज बाय थिक फाइब्रस टिश्यू लेयर नॉन एज फेशिया, और beneath the fascia each muscle is covered by a connective tissue sheath called epimysium. ओके, सो जब एपीमाइसियम होती है वो हमारे पास मसल को कवर कर रही होती है, फेशिया के नीचे एपीमाइसियम यानी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। ठीक है, और फिर हम ये कहते हैं कि जो मसल फाइबर्स होते हैं वो ग्रुप्स में अरेंज होते हैं, जिनको हम फेसिक्यूलाई यानी मसल बंडल्स, जिसको हम पहले पढ़ते हैं उनको फेसिक्यूलाई भी कहते हैं। और ये फेसिक्यूलाई जो है उसको कवर करने के लिए पेरीमाइसियम होती है, और ईच मसल फाइबर इज कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू एंडोमाइसियम। सी इन द डायग्राम दैट द आउटर मोस्ट जो होती है वो कनेक्टिव टिश्यू लेयर एपीमाइसियम आ जाती है, जो कि उसको कवर किया हुआ होता है, मसल सेल को कवर किया हुआ होता है। आगे फिर हमारे पास पेरीमाइसियम थी जिसने फेसिक्यूलस को कवर किया हुआ होता है, और एंडोमाइसियम जो होती है उसने मसल फाइबर को कवरिंग किया हुआ होता है। तो ये थ्री कवरिंग्स हैं, अलग अलग हैं, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम एंड एंडोमाइसियम। मसल फाइबर्स जो हैं वो अटैच हो रहे होते हैं बोन्स के साथ विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड टेंडन्स, जिसके जरिए से बोन्स के साथ अटैच हो रहे होते हैं। उसके अलावा हमारे पास स्केलेटल मसल्स की जो आउटर सेल मेम्ब्रेन होती है उसको हम सार्कोलेमा कहते हैं, और जो स्केलेटल मसल का साइटोप्लाज्म होता है उसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। सार्कोप्लाज्म के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जो कि स्ट्रक्चर्स एम्बेडेड हुए वो होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियाई आता है, मायोफिब्रिल होता है, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ग्लाइकोजन ड्रॉपलेट्स और ओकेशनल लिपिड ड्रॉपलेट्स होती हैं। और जो मसल फाइबर्स होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, और मैनी न्यूक्लिया उनके अंदर सीन होते हैं, नज़र आ रहे होते हैं हमें। न्यूक्लियाई जो होते हैं वो ओवल होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, और इनका जो न्यूक्लियाई होता है वो हमारे पास प्रेजेंट होता है सार्कोलेमा के नीचे। बल्कि जो अदर सेल्स होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के बिल्कुल अंदर प्रेजेंट होता है। विल स्टडी मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स जो होते हैं वो मायोफाइबर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड दे आर द पैरेलल filaments that are present in the sarcoplasm of the muscle cell, and they run along the entire length of the muscle fiber. And when we take the cross section of the muscle fiber, we can see that the muscle fibers appear like small distinct dots within the cytoplasm, and their diameter ranges from 0.2 to 2 micrometers, and their length also varies from 1 centimeter to 4 centimeter. In some muscle fibers, we can see that myofibrils are arranged in groups called Cohenim's areas. Now we can look at the diagram and make it also clear. You can see here this tendon by the help of which the muscle is attached to the bone and the muscle mass. The whole muscle cell is called as muscle mass. You can look at here the muscle fasciculus. The muscle fasciculus is bounded by perimysium, and epimysium is the connective tissue that bounds the whole muscle mass, and endomysium is the that bounds the muscle fiber. So we can here differentiate also by the help of this diagram. Now we will look at the microscopic structure of the myofibril in detail. When we use it with the help of light microscope, we see that myofibril consists of two alternate bands, I band and A band. I stands for isotropic and A stands for anisotropic. Now we can see in this diagram the alternate light, dark and light bands, I band and A band. The two I band is divided into two portions, and these portions are called Z lines, and A band is divided into two portions known as H zone. Now we can look at the structure of another structure of the skeletal muscle, that is sarcomere. Sarcomere is a structure and functional unit of the skeletal muscle, and it is also called as basic contractile unit of the muscles. A sarcomere extends from between the two Z lines. The Z line is the mid portion of the I band, and between from one Z line to the other Z line it consists of sarcomere. And when the muscle is in relaxed state, its length is about 2 to 3 micrometers. Now we will look at the components as we see that in the middle of A band there is light area H zone. Okay, H means hell, and light in German means Hansen, the discoverer of this H zone. And the middle of the H zone there is M line. Okay, in the middle of that zone there is M line, which is the middle portion of the myosin filament, and M line is formed by the myosin binding protein.
Okay, now when we look at the electronic study of the sarcomere, we see that the sarcomere is made of two myofilaments. These filaments are actin filaments and myosin filaments. Now we'll look at these both filaments. That what is the difference between the both filaments? Actin filaments are in extent in the I band, and myosin filaments are present in the A band. And we can look that actin filaments are thin filaments and myosin filaments are the one that are thick filaments. The important structure in skeletal muscles are cross bridges. Cross bridges are the projections that arise from the myosin filaments, and these bridges have enlarged structures called myosin head. एट देयर टिप्स मायोसिन हेड्स जो होते हैं वो एक्टिन फिलामेंट्स के साथ अटैच हो जाते हैं ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से जो है वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसका मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं स्लाइडिंग मैकेनिज्म या फिर रैचेट मैकेनिज्म. अब कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं वो ग्लाइड कर जाते हैं मायोसिन के साथ, और जेड लाइन जो होती है वो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये जो स्टेट है ऊपर वाली ये रिलैक्स स्टेट है, ठीक है, रेस्टिंग स्टेट में है, और ये जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है जिसमें आई और ए बैंड आपस में स्लाइड पास करके हैं एक दूसरे के साथ. जेड लाइन पास में आ गई है, यहाँ पे ये वाली जेड लाइन है, वहाँ से दोनों एक दूसरे के साथ साथ आ गई हैं. एच जोन और आई बैंड जो है वो बिल्कुल रिड्यूस होकर छोटा हो गया है, और ए बैंड के अंदर हमारे पास कोई भी चेंज नहीं आई है, सिर्फ जेड लाइन क्लोज आया है. तो इस तरह जो है वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते. We'll look at the composition of the skeletal muscles. The skeletal muscle is made up of 75% water and 25% solids. These 25% solids are distributed into organic substances and inorganic substances. Both inorganic substances we have some proteins. The proteins that we have studied in the skeletal muscles: myosin, actin, tropomyosin, troponin, actinin. These proteins from actinin to myoglobin are the contractile proteins, and these are the major proteins that are the functional proteins of the skeletal muscles: myosin, actin, tropomyosin and troponin. And other organic substances that are present in skeletal muscles are carbohydrates, lipids and nitrogenous substances. In inorganic substances we have potassium, sodium, calcium, magnesium chloride, phosphate and sulfate, and potassium is the principal mineral in the muscle.